So in this question, this is from October, November 16, paper 12, question number 26. All right, so in this question, they're saying this is from organic chemistry. They're saying that ethane 1,2-diol. All right, so we have a diol, means we have a compound which has two OH groups. This is the structural formula of ethane 1,2-diol. Reacts with an excess of ethanoic acid. So we are reacting alcohol with an acid, carboxylic acid, esterification in the presence of an acid catalyst. A compound is formed with the molecular formula C6H10O4, and definitely that compound would be an ester. So what is the structure of this compound? So we just have to identify what structure this compound has. All right, so without looking at the options, let's just write the reaction. Okay, so we have ethanoic acid, ethane 1,2-diol reacting with ethanoic acid. So ethane 1,2-diol means कि ये आपके पास ethane 1,2-diol है CH2 OH OH. This is ethane 1,2-diol और esterification में क्या होता है, ester link बनता है. So that because we have an OH group on this side, an OH group on this side, we have two OH groups, and in the question they have informed us that we have excess ethanoic acid. Because अगर आपने अल्कोहल के साथ एसिड को रिएक्ट करना है and you want to make an ester with excess ethanoic acid, so that means that two ethanoic acids would be reacting. One would make an ester link on this side with this OH, and the other will make an ester link with this OH. All right, so let's just have an ethanoic acid on this side, on the left of ethane 1,2-diol, CH3C double bond O OH, and on this side as well. So we have C double bond O OH CH3. So I just have drawn the structures in this way so that we can easily make the ester links. ठीक है, अब इसमें ये है कि आसानी से यहाँ पे ester link बनेगा, because I hope कि आप सबको याद होगा ester link में क्या हो रहा है, water molecule release होगा, small molecule would be released. So from this side, let's say we say कि OH group would be lost from this side and H from this side, then H यहाँ से जाएगा, OH from this side. So ये दो water molecule loss हो गए. And now let's just combine the molecules, make the ester CH3 C double bond O, and then ये जो आपके पास C double bond O है, ये जाके link कर जाएगा with this oxygen, and this oxygen will get linked to this carbon. Alright, so CH3 C double bond O, and then फिर उसके बाद क्या है हमारे पास oxygen, ये बन गया ester link CH2 O, and then again the ester C double bond O CH3. So ये आपके पास structure बन गया. अब let's just write it in the structural formula way, the way they have given us the options. So this would become CH3 CO2 CH3 CO2. ठीक है जी, दोनों ऑक्सीजन्स को हमने कंबाइन करके लिख दिया CO2, then CH2 then CO. All right, OCO. So OCO CH3. ठीक है, so let's just look at the example, the options. CH3O CO CH2 CH2. Obviously this is not the structure. Then CH3CO2 CH3CO2. All right, so CH3CO2 CH2 and then CO2. तो अब यहाँ पे आप कहेंगे जी CO2 we can write it in CO2 form. Basically अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं CO2 यानी from this question you can understand that how we have to write the structural formula. So if I just write it in this way, obviously ये भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन है, बट अगर आपके पास इस तरह से मेंशन है CO2, तो दैट मीन्स दिस इज C डबल बॉन्ड O OCH3. और आप अपने स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू दिस CH2 नॉट विद CH3. सो इफ़ वी राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला इन दिस वे CO2 CH3, तो ये इस तरह से ओपन होगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंडेंस स्ट्रक्चर्स को ओपन करने का तरीका भी देखें. तो अब नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो CH3 CO2 then CH2 and then OCO CH3. So this is the correct
स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट. ऑप्शन बी एंड सी आर ऑलमोस्ट सेम, बट ऑप्शन बी के अंदर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं CO2 को ओपन करूँगा तो देन जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये जाके कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, CH3 के साथ, नॉट विद द CH2 लाइक इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट.